ये कंटिन्यू में है, ठीक है, पाथ पर stimulation by vibration.
चलो ईयर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? कौन से आउटर में कितने को पार्ट आता है? यानी कि जो एक्सटर्नली आपको दिखता है ये बात, और एक्सटर्नल में यानी कि जितना अब तक आपको यहाँ से अंदर तक जितना दिखता है बाहर से उतना, ठीक है। फिर मिडल पार्ट आता है। मिडल पार्ट में क्या क्या आएगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ऑडिटरी ऑसिकल्स है, टिम्पैनिक कैविटी है और यूस्टेशियन ट्यूब है। यूस्टेशियन ट्यूब इसमें क्या है? नहीं लिया। फिर है इनर। इनर पे आएगा ऑसियस लैबिरिंथ और है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ऑसियस लैबिरिंथ में आएगा वेस्टिबुल, कॉक्लियर और सेमी सर्कुलर, ठीक है। पाथवे कैसा है इसका? एक्सटर्नल साउंड आएगा ईयर ड्रम के पास, जो है जो आपको ड्रम दिख रहा है, ईयर ड्रम यहाँ दिख रहा है सर्कुलर। ईयर ड्रम के पास आएगा, फिर कहाँ पे वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, फिर टिम्पैनिक कैविटी जो है उसको फिल करेगा। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, जो इंटरनली फ्लूइड रहता है उसको क्या होगा? वो मूवमेंट करेगा। जब जैसे वाइब्रेशन होता है, जैसे साउंड बॉक्स की तरफ देखो एक सर्कुलर होता है तो वो वाइब्रेशन करता है जब बजता है, सेम थिंग इंटरनल ईयर में हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो हेयर सेल स्टिमुलेशन, उसका भी क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। जब आप ईयरबड्स डालते हो तो इंटरनली ये सारा प्रोसीजर होता है। और ऑडिटरी जो नर्व है जो क्या करता है? वॉइस को सीरिविलियम तक क्या करता है? ब्रेन की तरफ ट्रांसफर करने का काम करता है। ऑडिटरी नर्व क्या करेगी? शेप होता है सीरिविलियम, सीरिविलियम यानी कि छोटा ब्रेन, ठीक है। ये था पाथवे। इससे पहले अपन देखेंगे अभी कि इन सब का क्या काम है, ठीक है। जैसे पिन्ना है, ये क्या करेगा? कलेक्ट करेगा साउंड को और ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। अपना ईयर ऐसा है जो चीज़ें नहीं सुननी चाहिए वो भी चीज़ें सुनता है, ठीक है। उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, चाहे आप कितना भी ये करो, लेकिन कितना हर्ट्ज तक वो सुन पाता है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। फिर है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल जो एम्पलीफाइंग द साउंड, वो क्या करेगा? इंटरनली वो साउंड को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा ईयर ड्रम से, ठीक है। फिर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेटेड द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल। ये क्या करेगा? वहाँ से सेपरेट कर देगा आउटर ईयर को फ्रॉम द मिडल ईयर, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर है टिम्पैनिक कैविटी, नैरो आर फिल द कैविटी, जो भी ये मूवमेंट फील करेगा फ्लूइड तो उसका मूवमेंट करने में हेल्प कौन करेगा? टिम्पैनिक कैविटी करेगा। उसी के साथ फिर है मिडल इनर ईयर, तो ऑसियस जो लैबिरिंथ है उसमें क्या होता है? नॉइज, सेंस, बैलेंस एंड सेंसरी, उसको बैलेंस करने का काम करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितने हिसाब से साउंड आपको इंटरनली लेना है, कौन सा छोड़ना है, किसके ऊपर फोकस करना है, उसका काम रहेगा ऑसियस लैबिरिंथ का, ठीक है। फिर है मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ जो रिसेप्टर ऑफ द ईयर, वो क्या करेगा? जो कौन सा है? ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व तक क्या करेगा? उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा। ये रिसेप्टर है जो ऑडिटरी नर्व के साथ क्या है? अटैच है, तो डायरेक्टली क्या होगा? ऑडिटरी नर्व के पास ये साउंड जो है वो हो जाएगा। समझ में आ गया? और पाथवे, ओके, इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया? डाउट है? मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड म्हणजे जे स्किनिश कलरचं तुला दिसतं इयर ड्रमच्या वरती, त्याच्या आतमध्ये असते फ्लूइड, ते फ्लूइड क्या करते? बॅलेन्स करते, म्हणजे इयर ड्रमला जास्त हार्मफुल नाही करते, प्रोटेक्ट करते. त्याची मूवमेंट झाल्यानंतर ती पुढची प्रोसेस, म्हणजे मूवमेंट ऑफ द फ्लूइडची झाल्यानंतर जे व्हायब्रेशन हेअर स्टिम्युलेशन होते ते ऑडिटरी नर्वपर्यंत पोहोचवायचं काम करते. जे तिला स्किनिश आणि येलोइश कलरचं ते तुला दिसत आहे अटॅच आहे दोन्ही दोन, आणि लास्टमध्ये दोन वेळेला अटॅच होतात. डायरेक्ट इनर इयर जे आहे वेस्टिब्युल आणि ऑडिट नर्वपर्यंत पोहोचवायचं काम त्याचं बाय द फ्लूइड, ठीक आहे. थोडंसं प्रोटेक्ट करायचं काम करते ड्रम्सला, म्हणजे जर इयर ड्रम चांगला आहे तर तुमचे कानं चांगले आहे, तो डॅमेज झाला तर तुम्ही बेरीज होता, ठीक आहे. मेन आहे इयर, म्हणून जेव्हा ते कान पूर्ण वगैरे म्हणतात जास्त भीती का नाही टाकू शकत, त्याचं कारण ते कानाचा पडदा पडतो तोच आहे इयर ड्रम, ठीक है. और किसी को कुछ डाउट है पूछना है? मिडल ईयर साउंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जे आहे
त्याच्यात टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन, ऑडिटरी ऑसिकल्स, टिम्पॅनिक कॅव्हिटी आणि ऑस्टियन ट्यूब. ऑस्टियन ट्यूब म्हणजे ते एंडिंगचे जे तुला 2 ट्यूब दिसत आहे सेमी सर्क्युलर कॅनल्सच्या तिथे बघ. वेस्टिब्युलर दिसतं की ते 4 ब्रांचेस असतात त्या एंडिंगला. हां, ते आहे वेस्टिब्युलर नर्व आणि त्यालाच म्हणतात कॉक्लिअर हे कॉक्लिअर सुद्धा नर्व त्यालाच म्हणतात. ठीक आहे. त्याच्या आधीचा जो पार्ट आहे तो आहे मिडल. ठीक आहे. टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन काय करतात? हे टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनचं काम आहे सेपरेट करायचं. म्हणजे जो एक्सटर्नली पार्ट आहे पिनल आणि एक्सटर्नल ऑडिटर याला सेपरेट करतो. ठीक आहे. कारण त्याचं काम तिथेच संपलं. त्याने एक्सटर्नल साऊंड घेतला, त्याचं काम तिथेच संपलं, त्याचा विषय तिथे क्लोज झाला. तो काय करतो? त्याला सेपरेट करतो. मिडल पार्टचं जेवढं काम आहे म्हणजे टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनचं तो तिथून सेपरेट करायचं काम करतो. म्हणजे असं बघ, आता जेवढं तू आवाज माझा ऐकतो तुला तेवढंच फुल स्टॉप झाल्यावर तेवढंच ऐकू येतं. तू फोकस बाहेरच्या आवाजावर करताय का? गाड्यांचा आवाज आहे तर एकसाथ तू आतमध्ये चाललाय का? नाही, सेपरेट होतोय ना तो. सोबत चाललाय का? तुझं कन्फ्युजन होत आहे का? नाही होत आहे. कारण तू फोकस कुठल्या आवाजावर आहे? माझ्या आवाजावर. ते काम कोण करेल? टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. सेम टिम्पॅनिक कॅव्हिटी पण काय करणार? त्याला ट्रान्सफर करायचं काम कोण करणार? टिम्पॅनिक कॅव्हिटीला सोबत करणार, सपोर्ट राहणार त्याचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ऑसियस लॅबिरल देते डायरेक्ट. ऑडिटरी ऑसिकल्स जे आहे सेम ऑडिटरी ऑसिकल्स काय करायचं? सेपरेट करायचं हे काम करत आहे. सेपरेशनमध्ये जे ऑडिटरी ऑसिकल्स आहेत त्याचं काम काय राहणार? की जे मायक्रोमध्ये जे सेपरेट करत आहे फोकस करायचं काम आहे त्याचं मेन फंक्शन ऑडिटरी ऑसिकल्स असतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर युस्टिशियन ट्यूब जो आहे तो ट्रान्सफर करेल नेक्स्ट लेवलला. ठीक आहे. नेक्स्ट लेवल म्हणजे तो मिडल इयरपासून इनर इयरशी अटॅच आहे. ट्रान्सफर करायचं काम कोणाचं आहे? युस्टिशियन ट्यूब. ठीक आहे. इज इट क्लिअर? अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? मग आपण व्हिडिओ पण बघायचा आपल्याला इयरचा, कारण मी पहिले एक्सप्लेन केलं, लिहायचो. आता व्हिडिओ बघायला रेडी? लास्ट व्हिडिओ आहे देन डन. Close your eyes, dance, and not fall on your face. Well, there's a little thing called the inner ear that contains the vestibulocochlear organ, which gives you the ability to perceive sounds and maintain your balance. The inner ear is found in the petrous part of the temporal bone, between the middle ear laterally and the internal acoustic meatus medially. It is a small and important area which houses the irregularly shaped vestibulocochlear organ, which kind of looks like a snail shell attached to a few bony rings. Now, the inner ear contains the bony labyrinth and the membranous labyrinth. The bony labyrinth is connected to the middle ear by 2 windows. The oval window is found on the lateral wall of the vestibule and is covered by the base of the stapes, while the round window is found at the base of the cochlea and is covered by the secondary tympanic membrane. The bony labyrinth within the otic capsule is filled with perilymph and is made of a series of cavities, which are the vestibule, the semicircular canals, and the cochlea. Suspended within the bony labyrinth, there's the membranous labyrinth, which is basically a series of sacs and ducts filled with endolymph. The membranous labyrinth is organized into the utricle and saccule within the vestibule, the 3 semicircular ducts and their membranous ampullae, and the cochlear duct within the cochlea. Let's take a look at the structures responsible for balance, which are the semicircular canals on the one hand and the utricle and saccule on the other hand. There are 3 semicircular canals, an anterior, posterior, and lateral canal, oriented in the 3 different planes of space. Each canal contains a dilated end called the ampulla that contains an area of sensory epithelium called the ampullary crest.
This is lined with tiny hair cells that pick up information about rotational movements of the head in the plane of the duct within which it is contained. The hair cells of the ampullary crest are innervated by the vestibular branch of the vestibulocochlear nerve, and the cell bodies of these neurons are found in the vestibular ganglion. Now, the utricle and the saccule both contain areas of sensory epithelium called maculae, which contain hair cells that detect information about linear acceleration. The hair cells in the utricle detect movements in the horizontal plane, while those in the saccule detect movement in the vertical plane. The macular hair cells are also innervated by the vestibular branch of the vestibulocochlear nerve. Now, that was a lot of info. For a quick break, feel free to pause the video and remember the parts of the inner ear that play a role in balance. Now let's switch gears and look at the structures responsible for hearing, starting with the cochlea. The cochlea is a bony tube that spirals on itself, resembling the shape of a snail shell, and contains 3 fluid-filled cavities called the scala vestibuli, the cochlear duct, and the scala tympani. Now, the cochlear duct is between the scala vestibuli and the scala tympani, and its roof is formed by the vestibular membrane, while the floor is formed by the basilar membrane. The organ of hearing, called the spiral organ, or the organ of Corti, is fixed to the basilar membrane and contains hair cells. The tips of these hair cells insert into the tectorial membrane, which is a gelatinous membrane that overlies the spiral organ. Now, how do these structures help us hear? Well, when you are listening to a song, sound waves travel to the tympanic membrane and cause it to vibrate. These vibrations are transferred to the auditory ossicles in the middle ear. The base of the stapes in the oval window vibrates and creates waves of hydraulic pressure in the perilymph, which move within the scala vestibuli. These waves then reach the helicotrema, which is the point where the scala vestibuli and scala tympani are connected, and then continue on in the scala tympani. They travel within the scala tympani to reach the round window, where the pressure waves are dampened by the secondary tympanic membrane. While traveling within the cochlea, the pressure waves push on the basilar membrane and cause it to move, stimulating the hair cells of the organ of Corti. This creates action potentials that are sent along the cochlear branch of the vestibulocochlear nerve, which has cell bodies in the spiral ganglion. The cochlear branch and the vestibular branch come together to form the vestibulocochlear nerve. The nerve then travels through the internal acoustic meatus, where it is accompanied by the facial nerve and the labyrinthine artery. The vestibulocochlear nerve exits the internal acoustic meatus into the posterior cranial fossa and enters the brainstem. Just a quick break before the recap. Can you name all the elements in this image? All right, as a quick recap, the inner ear is found in the petrous part of the temporal bone and is made of the bony labyrinth, which contains cavities filled with perilymph, and the membranous labyrinth, which is made of sacs and ducts suspended in the bony labyrinth. The parts of the bony labyrinth are the semicircular canals, the vestibule, and the cochlea. The membranous labyrinth is organized into the cochlear duct, the utricle and saccule, and the 3 semicircular ducts. Both the utricle and saccule contain areas of sensory epithelium called the maculae, which detect linear acceleration. Each ampulla of a semicircular duct contains an area of sensory epithelium called the ampullary crest and detects rotational movements of the head. Both of these cells are innervated by the vestibular branch of the vestibulocochlear nerve.
The cochlea is a bony tube that spirals on itself, containing 3 fluid-filled cavities called the scala vestibuli, the cochlear duct, and the scala tympani. The roof of the cochlear duct is formed by the vestibular membrane, while the floor is formed by the basilar membrane. The organ of hearing, called the organ of Corti, is fixed to the basilar membrane and is covered by the tectorial membrane. The base of the stapes vibrates, causing waves in the perilymph in the scala vestibuli, which continue within the scala tympani at the helicotrema to reach the round window. Pressure waves push on the basilar membrane, causing it to move and stimulating the hair cells of the organ of Corti, which are innervated by the cochlear branch of the vestibulocochlear nerve. Helping current and future clinicians focus, learn, retain, and thrive. Learn more. चलो अभी सभी लोग स्क्रीन के चार्ट पे तरफ आए विदाउट शो बचा है